Hey guys, we're going to do the weekly outlook. Okay, so this is going to be the third week of December, and this is going to be my last week of trading. Okay, if I get any setup, I'll take it. Otherwise, this is going to be my last week of trading. इसके बाद I'm going to trade directly after. Let me check calendar. So after 10th January, okay. So after 10th January, I'll be going to start trading 10 January 25. We will take 20 days break from market, okay. And usually मतलब I have seen from last 2 3 years कि वीक 4 से बेसिकली दिसंबर में थोड़ा मार्केट स्लो जाता है बिकॉज ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज एंड न्यू ईयर सो आई बिलीव इट्स very important as well to take break from the market, okay. Every week we do trade, every week we put our energy into market, lots of emotion comes and go, right? But I think I need break as well, so I'm going to take a break from next week from 20. If I get any setup this week, current week, then I'll be looking for trade, otherwise I'll avoid personally, okay. So if you see Forex Factory, we have so many news coming this week, by the way, okay? So you can expect some volatility in market basically, okay? Today, Monday, basically we have this is Indian time, okay? So we have bunch of news on afternoon, okay, on Euro GBP. The main news we have is this one, okay? जो थर्सडे को रात में कि मतलब वेडनेसडे को मतलब थर्सडे को जो 12:30 में 12:30 में बेसिकली अपना यूएसडी का न्यूज़ है यानी कि वेडनेसडे को रात में, ठीक है। सो दिस यूएसडी एफओएमसी न्यूज़ इज़ वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ओके। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वेडनेसडे को जो न्यूयॉर्क सेशन होगा या फिर लंदन सेशन होगा उस दिन मार्केट स्लो होगा, क्योंकि थर्सडे मतलब लेट नाइट वेडनेसडे को थर्सडे को उस दिन न्यूज़ है यूएसडी में, तो वी कैन आई एम एंटिसिपेटिंग कि वेडनेसडे को थोड़ा मतलब लो वॉल्यूम यूएसडी पेयर्स में पॉसिबली हो, ठीक है। देन ऑफ कोर्स थर्सडे को सही रहेगा, न्यूज़ सब रिलीज हो चुका होगा। एंड ऑल्सो वी हैव सम बिग न्यूज़ ऑन जेपीवाई हियर एज वेल, ठीक है। सो अगर जेपीवाई पेयर्स ट्रेड करोगे उस दिन यू कैन एंटिसिपेट बिग वॉलेटिलिटी इन द मार्केट दैट डे एंड एवरीथिंग लुक्स गुड, ठीक है। बस यही मेरे को बताना था दिस एफएमसी। So let's come to trading view and let's quickly discuss the weekly outlook. So let's start with DXY. So if you see DXY looks bullish right now. Okay, we have we are right now holding this weekly bullish fair value gap, right? And just give me 1 second. Okay. So if you see DXY, we created this weekly bullish value gap and we're expecting this weekly. So I'm looking for price from this weekly internal to external. Still, you can see we have this enough range for market to move, right? If you notice here, one thing, we have created this weekly swing low, right? Swing low pattern, right? जो फोर्थ कैंडल पे हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि कंटिन्यू करे हायर, सो दैट्स व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि स्विंग लो फॉर्म है एट की लेवल, ओके। सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि जो नेक्स्ट वीकली कैंडल ओपन होगा वो भी बुलिश होगा। सो माय बायस इज बुलिश ऑन डीएक्सवाई, पहला ये इंटरनल टू एक्सटर्नल, और जो नेक्स्ट डे मॉडल अपना है जो कि मैं यूडीमी में भी अपने मेंटरशिप में भी मैंने काफ़ी टाइम डिस्कस भी किया है, ओके, एंड यूट्यूब में भी काफ़ी टाइम डिस्कस किया। सो व्हाट आई कैन anticipate next week open, maybe first market will trade lower, okay, to some key level, okay, and then start trading higher, okay. Then we have to frame our trade. One market starts showing some bullish sign, okay, then we can look for long on DXY, then short on EURUSD and GPUSD, right?
So on daily time frame, if you see, so daily time frame, you can see on the we have this one bullish value gap, but it is too low. ये जो bullish value है वो काफी नीचे है. You can see market is here right now. So maybe it can come or maybe it will not come. We will see. But I am not uh, intercepting कितना नीचे आ सकता है प्राइस. Of course it can come. We will see. यहाँ पे अपना एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन चुका है कि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट. ये भी बेसिकली इन्वर्टेड हो चुका है, ओके. डिसरेस्पेक्ट हो चुका है जब ये कैंडल क्लोज हुआ था. नेक्स्ट कैंडल यू कैन सी इट्स होल्डिंग राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम मार्क्ड. सो लेट मी डिलीट दिस बल्ब. सो थोड़ा चॉपी है. डेली डेली में ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर Monday, Tuesday, maybe we can trade lower to this level. Okay. So see what I'm intercepting कि यार Monday, Tuesday, maybe market start showing some bearish sign. जैसे मैं वीकली कैंडल डिस्कस किया ना, कि आई एम इंटरसेप्टिंग बुलिश. ओके. सो एवरी टाइम मार्केट लीव्स वीक्स, राइट, यू कैन सी. सो व्हाट आई एम इंटरसेप्टिंग कि मे बी मंडे ओपन मंडे ओपन हुआ, मंडे ट्यूसडे थोड़ा नीचे ट्रेड किया, फिर वेनेसडे को अपना न्यूज़ है जो रात में 12:30 में, मतलब थर्सडे को, then news can basically expand price higher. Then फिर Thursday, Friday we can anticipate कि DXY continue करे bullish. So that's what I am anticipating. Okay, कि Monday, Tuesday manipulate हो lower, फिर news से market start करे और basically bullish signature देना. Of course I can be totally wrong. uh, हम लोग यार क्या करते हैं मार्केट में, बेसिकली वी क्रिएटिंग स्टोरी की, ठीक है. अगर ऐसा होगा तो वी कैन लुक फॉर दिस. अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा. जिस टाइप से मार्केट प्रिंट करते जाएगा उस टाइप से हम लोग रिएक्ट करेंगे, राइट. नाउ सो नेक्स्ट व्हाट, पहला ये चीज समझ में आ गया वो जो डेक्स में मैं डिस्कस किया. सेकंड व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि हो सकता है कि प्राइस मंडे और ट्यूसडे कंटिन्यू करे पुश हायर करना, मे बी वी क्रिएट सम बुलिश वैल्यू गैप, ओके. और ये जो वीकली एक्शन है वो अनटैप रहे, तो मे बी वी कैन, जो बुलिश वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा फॉर एग्जांपल, देन फिर डेली इंटरनल टू एक्सटर्नल वी कैन लुक फॉर लॉन्ग. दैट्स व्हाट वी कैन एंटिसिपेट. ओके. सो ये एक सेकंड चीज मैं अपने माइंड में रखा हूँ. ऑफ कोर्स विल सी हाउ मंडे कैंडल इज गोइंग टू प्रिंट. थर्ड, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक है. क्यों 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज करें तो वीकली इंटरनल टू एक्सटर्नल है, तो वीकली से हमें 4 आवर पे आते हैं, ठीक है. सो व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग, कुछ इस टाइप से लेट से प्राइस मूव किया लोअर, ओके. लेट से ये डेली फॉल जब टैप करें तो अच्छी बात है, बट लेट से अगर नहीं करता भी है, लेट से पहले ये स्विंग लो स्विप किया मार्केट, ओके. ये स्विंग लो स्विप किया एंड दे स्टार्ट करता है मार्केट डिस्प्लेस करना हायर on H4 time frame with bullish fair value gap. Okay, let's say we're getting bullish fair value gap for example. Okay, after sweeping this low. Okay, so it can be a silver bullet entry model for us. Okay, then I can anticipate कि H4 bullish fair value option long देख सकते हैं external in liquidity में, because overall weekly internal to external हम लोग देख रहे हैं. 4 hour में we can anticipate this type of price action. So I'll see how it is going to form or DXY. Okay, let's set alert here as well. Now let's come to Euro USD. So Euro USD same thing, just opposite. This looks weekly internal to external on the bearish side, right? But if you see daily time frame, daily में कुछ भी कहीं पे भी bearish वाली गैप यहाँ पे नहीं है. But if you see daily time frame, we have swept this swing low, right? We have created this daily bullish engulfing, right? We have created this daily bullish engulfing. So maybe we can look for long little bit higher. लेकिन हम लोग का drawn liquidity क्या है? कुछ तो drawn liquidity दिख ही नहीं रहा है daily time frame में, right? So if you go one time frame lower on 4 hour, uh, let's say अगर ये daily bullish engulfing काम करता है तो we have this daily bullish engulfing from this low to this high. This can be our drawn liquidity on 4 hour time frame, जो ये bearish वाली gap है, ठीक है. And you can see kind of trend line liquidity भी अपना यहाँ पे, ठीक है. You can see this one. So we have this nice trend line liquidity build up. तो daily engulfing भी है, maybe you can anticipate this something like this and then continue price higher. Okay, अगर बैक साइड मूव मिलता है आपको M15 1 hour में ड्यूरिंग लंडन किल जोन या फिर कुछ भी प्राइस एक्शन बुलिश दिखता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. और वी हैव नाइस लिक्विडिटी जस्ट बिलो दिस H4 बेस्ट अर्ली गैप, ओके.
सो अगर ये डेली इनगल्फिंग, डेली बुलिश इनगल्फिंग ट्रेड करना है तो दैट कैन बी आवर टारगेट ऑन H4 दिस वन, ठीक है। आई बी लुकिंग फॉर दिस एज वेल ड्यूरिंग लंदन के जोन, क्योंकि काफ़ी सारा न्यूज़ है यूरो में, यू कैन सी, we will see. Of course, I can be opposite wrong. So London kill zone का मैं wait करूँगा. If I get any bullish signature, then I'll be looking for long. Okay. बट या ओवरऑल पिक्चर अपना बेरस है वीकली से, जो इंटरनल टू एक्सटर्नल हम लोग देख रहे हैं वो ओवरऑल पिक्चर बेरस है। लेट्स से अगर ये डेली बुलिश एंगल्फिंग काम नहीं करता है, मे बी स्टार्ट एक्सपेंडिंग लोअर, ओके, विद एंड लेट्स से न्यू डेली बेयर्स होल्ड गैप या फिर 4 आवर में कोई अच्छा सिग्नेचर बैक साइड मूव मिल रहा है तो यू कैन लुक फॉर सेल, जैसे DXY हम लोग डिस्कस किया, राइट। जैसे मैं DXY में बोला कि हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे मार्केट मे बी ट्रेड करे लोअर, राइट। तो वही हो सकता है कि अगर DXY नीचे ट्रेड करेगा तो ऑफ कोर्स यूएसडी विल गो अप एंड वी कैन टारगेट दैट H4, राइट। सो लेट्स सी। आई नो काफी लोगों को बाउंस कर जा रहा होगा, जो लोग एकदम न्यू, बट आई होप समझ में आ रहा होगा। सो आई विल सी हाउ इट वर्क्स ऑफ कोर्स, बट लेट्स से ये यहाँ तक आता नहीं है, ठीक है, एंड स्टार्ट कंटिन्यू पुशिंग लोअर। सो ये जो बुलिश वाली गैप है इट विल बिकम इन्वर्टेड, अगर नया बेयरिश वाली गैप फॉर्म करेंगे दैट मींस ऑर्डर फ्लो इज स्टिल bearish right now, right? Then we can look for continuation sell. So जैसे मार्केट प्रिंट कर जाएगा वैसे वैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे। GPUSD looks good to me personally. Okay, just give me 1 second. इसको डिलीट कर देते हैं। So okay, क्या चीज में डिलीट कर दिया? Just give me 1 second. Okay, no. So same thing, DXY में जैसे बुलिश है, so GPUSD भी looks bearish weekly internal to this external, and this external is also our previous month low, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इसमें भी अपना नेक्स्ट डे मॉडल है जो वीकली में हम लोग बुलिश कैंडल एंटिसिपेट कर रहे हैं, फोर्थ कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में, इसमें भी हम लोग बेयरिश एंटिसिपेट करेंगे क्योंकि वी फॉर्म दिस स्विंग लो पैटर्न हियर, राइट। आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम अलाइन है वीकली के साथ। देखो अब जैसे यूरो एसडी वीकली में बेयरिश है, बट डेली में वैसा कुछ बेयरिश नहीं दिख रहा है, राइट। वही चीज और GPUSD वीकली में बेयरिश लग रहा है, डेली भी बेयरिश फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि we form this fair value gap here, you can see bearish value gap and kind of breaker basically, ठीक है। तो मैं तो चार्ट डिलीट करता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। So you can see we have this breaker with overlapping with fair value gap, so we have this unicorn area, right, unicorn model on the daily time frame, okay, but we have to see क्या ये bearish value gap टैप करने मार्केट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर ये टैप करता है तो of course it will be very good to look for sell, uh, and to target this weekly low, basically weekly external range liquidity basically, ठीक है। इवन इफ यू टैप दिस, यहाँ तक भी टैप करके स्टार्ट करते रिजेक्ट करना, आई विल बी लुकिंग फॉर सेल क्योंकि वी टैप दिस ब्रेकर ब्लॉक, बट ऑफ कोर्स इफ यू टैप फेयर वैल्यू गैप इट विल बी मच बेटर। हो सकता है कि जल्दी को ज़्यादा एडिट कर दे रहा हूँ मैं। हो सकता है कि मंडे कैंडल कुछ इस टाइप से प्रिंट हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ओके, एंड वी फॉर्म न्यू बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, फिर ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप से वी कैन लुक फॉर कंटिन्यूएशन डाउन साइड, ओके। सो वी विल सी ऑफ कोर्स, because third candle closed very strongly downside, so this can be a breakaway gap, so I'll be watching 4 hour time frame also. 4 hour market continue trade करता है lower, okay, something like this, then I'll be looking for sell here. Yeah, GPU looks good for the sell. uh, I am watching this USD CAD basically created new bullish value gap, so let's see how it goes. If we tap, if we open, trade lower, tap this H1 H4 में confirmation मिलेगा तो we can target whatever the high will be, ठीक है। Let's check Euro odd. Euro odd already said with you guys last week, so not going to touch same thing, but एक चीज मेरे को इसमें डिस्कस करना है, you can see we have created this weekly bearish value gap. Now if you see price, जो लास्ट वीक का कैंडल जो क्लोज हुआ है, you can see काफी एग्रेसिवली ये विक दे के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। यू कैन सी दिस विक, एक टाइम के लिए ये कैंडल पूरा बेरिश होगा, राइट। अगर मैं एक बार रिप्ले करके दिखाऊं, एक टाइम के लिए वो जो वीकली कैंडल था वो पूरा बेरिश था, राइट।
but then it closed very strongly upside. So maybe this is going to be our जो ये वीकली फेयर गैप है, मे बी ये अनटैप रहे, मार्केट इतना नीचे ट्रेड नहीं करे, ऑफ कोर्स इट कैन कम एंड टैप दिस लेवल, बट मे बी टैप नहीं करे, ठीक है। एंड अगर डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, कि we have this inverted fair value gap, right? We have this bullish value gap holding. So maybe price continue करे push करना higher and higher, okay? Maybe can open हो कंटिन्यू करे हायर पुश करना, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आपको यहाँ पे कुछ एंट्री मिलता है तो यू कैन लुक फॉर, पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम ऑल द वे डाउन दैट वीकली फेयर वैल्यू गैप एंड देन फिर ट्रेड हायर, बट ऑफ कोर्स इट कैन डू, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा। दैट्स वाई जैसे जैसे मार्केट प्रिंट करेगा वी विल रिएक्ट बेसिकली, ओके। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक जीपी ऑड। सो देखो जीपी ऑड में वैसा कुछ जैसे यूरो ऑड में देखोगे तो यूरो ऑड में काफी स्ट्रांगली क्लोज हुआ है ऊपर, राइट, वही जीपी ऑड में उतना भी स्ट्रांगली क्लोज नहीं हुआ है। सो वी हैव दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। पहला जब ये मार्केट, ये वाला जो कैंडल है, ये जब एक्सटर्नल स्वीप किया तो इट्स लुक्स लाइक एक्सटर्नल टू इंटरनल इज इट इज गोइंग टू प्ले, राइट, बट आई पर्सनली ट्रेड इंटरनल टू एक्सटर्नल, so I'll be looking for still bullish move once market have this weekly fair value gap confirmation मिलता है तो I'll be looking for to target this external। अब डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये काफी अच्छा चीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। So remember this is our weekly fair value gap, right? Weekly bullish value gap. Daily में we have formed this Sartan entry model, right? So what you can anticipate अगर कुछ इस टाइप से प्राइस एक्शन प्रिंट होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड करता है हायर टू दिस डेली फेयर वैल्यू गैप, ओके लेट्स ओपन ट्रेड हायर टू दिस डेली बेस्ट वैल्यू गैप, अगर यहाँ पे फिर H1 H4 में आपको कंफर्मेशन मिलता है कुछ, we can target this weekly fair value gap, okay, and then फिर weekly internal to external, okay। So we'll see how it is going to form। ये अगर पहले भी मार्केट लेट से कंटिन्यू करता है ट्रेड करना लोअर एंड यहाँ पे फिर H1 H4 सब में कुछ अच्छा बैक साइड मूव मिलता है, वी विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग इट, राइट। यूरो कैड, same thing, I believe I have discussed this if I'm not wrong. So last week, market tapped this stop block, right? You can see this is the last down close candle that took out all this equal low, this swing low liquidity. So this candle, last week we tapped this weekly stop block. Right now we are at this weekly bearish value gap, but daily, ये मैंने say किया if I'm not wrong. I said on the free group and last week भी हम लोग ये discuss किए थे. So still looks bullish to me. Okay. Uh, GP CAD looks good, no doubt. GP CAD also looks good. To look for long. Okay, weekly we can see order flow shifted to bullish. We had this bearish value gap that becomes inverted, and we have new bullish value gap. So of course I'll be looking for long. Once market will tap this internal to external, and daily में already हम लोग bullish value gap में, and that is overlapping with this mitigation block. Okay. So let's see. I'll be looking for any backside move on H1, H4, or some strong confirmation. I'll be looking for long क्योंकि kind of equal low, equal high liquidity यहाँ पे अपना है। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीपी जेपीवाई उतना कुछ खास अभी तक मेरे को दिखा नहीं है। अगर यूरो जेपीवाई का बात करें, सो जो ये बेरिश वाली गैप था इन्वर्टेड बन चुका है। वी हैव नेक्स्ट बेरिश वाली गैप हियर, सो मे बी प्राइस विल कंटिन्यू पुश हायर, बट जेपीवाई में वैसा कुछ मेरे को दिखा नहीं है पर्सनली अभी तक। सो आई एम अवॉइडिंग, और काफ़ी सारे पेयर्स ऑलरेडी है, वी हैव टू बस बस देखना है कि कैसे प्राइस एक्शन प्रिंट हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। दिस इज माय लास्ट वीकली एनालिसिस। After this I'll be doing a weekly analysis after 10th January. I'll be very less active on the group, of course. Those who are my private student, you can ask any question whenever you want, but I'm going to take break, okay?